Hi everyone, hope you all are doing well, and this is Shashwat here from Design Teenage. I wish कि आप सब लोग बहुत अच्छे से हो, बहुत अच्छे से you are preparing for your NIFT entrance examination. And today's session is all about how you can prepare, what are the most important topics जो आपको prepare करना है आपके आने वाले NIFT एग्जाम के लिए, और क्या क्या वो टॉपिक्स है जो मस्ट है, जिनको देखना ही देखना है, एंड मैक्सिमम टाइम्स क्या क्या टॉपिक है जिनको प्रैक्टिस करना है, एंड दैट विल मेक यू मच मोर बेटर. I'll just check my audio if it's coming in a proper manner. And that will make you. Yes. Okay, fine. So we are good to go. Now I'll just keep it open in the live chat section. If you guys have any queries, any doubts, you guys can ask me in the live chat section. Fine. So we have here quite a few things जो आज हमें discuss करना है, and like we will go step by step starting from CAT slowly and gradually moving into GAT. मैंने I have just noted down the topics over here in this notebook, and one by one we will quickly discuss that. Okay, what are those topics that we need to understand and we need to go through for NIFT, and क्या क्या topics ऐसे हैं which are kind of the must, and क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जरूरत है. So we will try to understand all these things. Okay, so coming to CAT, first of all, what are the topics? We will go one by one into them. Very first thing which I have noted down over here is your design thinking. You can ask me any sort of questions that you have related to this in the comment section, and definitely do go to the description box. Anyone watching this live session now and people who are watching a playback of this live session, the app link is given over there. Make sure you download the app link. We have brought a very affordable NIFT entrance preparation crash course program for each and every aspirant in India. Now that is like, you know, what I must tell, it's not something related to जो बाकी institutes आपको आके बोलते हैं कि 15 days का crash course हो गया 30 दिन का. Just for the name, it's a crash course. This will be covering up till your NIFT entrance examination, that is in first week of Feb. If the date of the exam is postponed due to any reason, the classes will be continuing from our side at no extra cost. Coming to what after the NIFT exam, so till your college admission guidance, we will be there to help you out under the same course. So you will get a complete guidance in this crash course till your college admission, no extra amount to be paid. The price of this crash course is 1,999 only, and what you get, definitely these two things. Then inside the crash course, regular live classes, your study materials all in PDF format via the Design Teenage app, and most importantly, how you go and write the exam at the NIFT Entrance Exam Center in the CBT mode. Similar pattern you will get over here, and similar atmosphere you will get. Just the difference is you will write the exam from your home. So we have a complete exam portal for Design Teenage students. Writing the exam on CBT mode, you can like have that. So all these things bringing to you together till your college admission with a proper guidance at 1,999. I don't really think that there is any other institute who can provide you, or at this price any student should face a problem. But still, if you are facing any issues, do connect us on the contact number or do write us in the email provided over there. We will surely be very happy to help you out and help you for your preparation, and make sure you do your best in the entrance exam. So let's quickly jump into what we have in the CAT section. I'll just write down very first three topics. One is design thinking. Secondly, what I have noted down over here is color theory. Okay. Third one is color psychology. So these are the very first three topics जो मैंने लिखा है, which I have noted down over here. Now, how we should progress for this and how we are going to move ahead,
and prepare for these three things. That is one of the most important things that we need to understand first. So what is design thinking? So design thinking, it's a process. I must tell it's a process where you understand or where you try to innovate or try to create something. We must definitely understand, see, there is nothing called imagination absolutely from nowhere. So imagination is always you can tell an extension of reality. So until and unless, for example, you are imagining something, you imagine that there can be a flight like this. Okay, just for example, this extension of imagination is again from something which I might have seen somewhere, or it's coming out of my subconscious mind, which I have seen long back in my childhood or somewhere like that. Now this is just a very simple representation. Now again, if I call this also a design, I drew lines to explain this design. Where did these lines come from? This is an extension of reality. We need to understand that. I'm really sorry guys, I just went to bring the duster. So okay, so design thinking is something like a process in which you understand and think about something. So अगर ये एक पेन है और आपको you have to make a design of this, और या फिर आपको कुछ guidelines दिए गए हैं, and as far as that you need to innovate or create something. That is what is design thinking. मतलब basically एक process through which you go and you understand, you bring something into its impact. That's all about design thinking. Let's quickly go into color theory. What is color theory? So this is one done. Now let's move on to color theory. Color theory is nothing but again ये सारे चीजें जो है ना, comparatively I feel किसी भी अगर design aspirant serious है regarding his or her studies, and they are quite ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके parents ने बताया तब आप जाके इसमें घुस रहे हो, right? So it should be coming out from you. कुछ भी हो, engineering हो, medical हो, design हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, it should be coming out from you, that okay, you are the person who is kind of inclined towards that. You have explored the things inside that career out of your own, and then you have decided कि हाँ मुझे इसमें जाना है, right? और एक चीज याद रखना, ये कभी भी फाइनल नहीं हो सकता. You are just 18 years of age now. कोई आपसे पूछे आपका करियर क्या है, as of now, in perspective of today's view, you can tell that okay, this is what I am willing to go for. कल के हालात कैसे रहेंगे, what will be tomorrow's condition, and how things will change, no one knows. So ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. What you decided today, that is what you are going to carry forward for the rest of your life. So what you are doing today, focus on that और उसके लिए अपना best do. That's all I had to say for this. Now let's quickly move on to color psychology. Color theory. What we have. So color theory is nothing but we see a different set of colors. Now how we should impact in sense of color theory, I must tell how we should use those colors, where we should use. This is all about the this is, I must tell, the discussion all about color theory. Abhi right now, for example, you see this whole setting, green and white. Okay, or let's talk about this too. So these are kind of creating a huge sense of contrast. One extreme end this side, other one is extreme end this side. This is black, this is white. Now something like this, what are contemporary colors? What are like in a painting, when do you call it that okay, this painting is monotonous? When do you feel that? So what is the kind of color composition used in that? The understanding of all these things is your color theory, where how to bring some impact. So आप देखे होंगे big brands, they do a lot of research in design thinking, in color exploration, कि कहाँ पे showroom पे कैसे this चीज को रखना है, so it will be highlighted, what sort of light sources we should put on that object and highlight it, and that will bring the glory. So this is all about color theory, and this color theory जिसके बारे में इतना research करके इतना use लाया जा रहा है, the implementation of this color theory, why is it being done?
क्योंकि कारण के बिना तो हम लोग कुछ करते नहीं है. डेफिनेटली इट्स वेरी एज सिंपल एज दैट. तो ये जो इतना कुछ सोचा जा रहा है इस कलर थियरी के बारे में, दैट इज ड्यू टू दिस कलर साइकोलॉजी. एज सिंपल एज दैट. तो लोगों को कलर को लेके क्या परसेप्शन है ऑन एन एवरेज, हाउ मैक्सिमम पीपल रिएक्ट टू व्हाट कलर इन व्हाट सिचुएशन एंड हाउ डज इट ऑकर. This thing is known as color psychology, and on basis of this color psychology, this color theory is made, and you see products हो कुछ भी हो. For example, you are आप लोगों ने देखा होगा in train lines हो या फिर like traffic lights. I will say you have the red, yellow and green. Now why is it like that? यहाँ पे red तो red ही है. Now this is something, when you see red, it gives you a sense of danger. Okay. Or like it gives you a sense of danger, as well as I must tell इसमें थोड़ा सा physics भी involved है. So wavelength of red, like it gives the effect or the impact which comes from physics कि ये बहुत दूर से भी दिखता है. You can see it from a very far distance compared to the other spectrums or the other lights that are available, like other rays that are available or the other wavelengths that are available. So that is one of the other important reason for the usage of red as well. Now जब आपको पता है कि everywhere red means danger, so जब भी like you are driving on roads, you will see there are some sort of lights which are guide lights on highways which are kept to give you an understanding कि after this comes the next. So you will not go on that side. तो हमारा mind वैसे react करता है. This is all about color psychology. Now I will just rub this off and let's quickly move on कि बाकी topics क्या है जो सीखने हैं. अच्छा, don't think I am rubbing with my hand because मेरे पास duster है छोटा, like so I am just using that and my hand covers that. Okay. So after this, what all do we have after color psychology? I will just note down the other topics first. So it's elements of design. Okay. Next one, it is principles of design. Okay. Next one is your perspective. शायद जगह छोटा पड़ जाएगा. Okay, anyways, we will try to write down everything, discuss, and then we will go into that. Okay. Okay. Conventional uses. Poster design. Stamps. Okay. Now, what else do we have? Okay, comic strip, product design, coloring. Okay. Now, apart from this, what else do we have? I'll note down those as also. Futuristic design. I guess these things are pretty visible to you. I will just have a quick check. Okay. So we have futuristic design. Then we have mascots. After that, we have hoardings and banners. Something related to poster ही हो गया.
After that we have pictograms. After that we have sequential drawing. After that we have various textures and expressions. Okay. Now, what else do we have? We have metamorphosis. Okay. We have logo. Definitely logo design. And we have human anatomy. Okay, ये सब मैं इस साइड में लिखूंगा. I will just erase the cat part for now. And ये बाकी टॉपिक्स लिख देते हैं एक साथ होंगे ये. So we have human anatomy. We have still life drawing. We have composition and rendering. We have character development. So basically, if I talk about what all do we have, so this is all that we have in your CAT section. On an average, I will tell the most important things, or it covers almost the whole of the syllabus itself. जो हमें discuss करना है, जो हमारे कोई like exam में आने वाले हैं. So it covers almost everything. I just moved away from the board so that you can have a better view of it. Okay. So यही सारे चीजें हैं. Almost you can tell on an average what we need to cover and what we have. Now ये सारे चीजें तो डिस्कस कर चुके हैं, तो क्विकली बाकी भी डिस्कस कर ले. एंड आफ्टर दैट जो मैंने प्रॉमिस किया है वो तो आने वाला ही है. फ्रॉम डिजाइन टीनेज यू आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर लेक्चर ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ डिजाइन टीनेज. एवरीवन, हर एक को मिलेगा. एंड आफ्टर दैट बाकी जो इन डेप्थ डिस्कशंस है, जो कुछ भी है, उसके लिए तो ऐप है. एंड you all are free to join the course. किसी को कुछ भी दिक्कत है regarding course, regarding fees, just definitely give a call. Do give a call, and we are there to help you out. We are there to make a difference, and we are there to make this a success with you and be a part of your success to be. So now हम बाकी चीजें डिस्कस कर ले क्विकली जो कुछ भी है. So over here we have color psychology तक तो डिस्कस कर ही लिया है. अभी एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, बाकी सारे चीजें क्या है इन शॉर्ट, लाइक आई विल गिव यू अ ओवरव्यू, और उसके बाद डिस्कस करते हैं लाइक यू नो कि गैप में क्या है. एंड डेफिनेटली आफ्टर दैट हर एक दिन आ जाओ, बैठो यूट्यूब पे डिजाइन टीनेज के चैनल में और डिस्कस करते हैं. एक के बाद एक एक टॉपिक लेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि वी विल स्कोर द बेस्ट. सो नाउ वी हैव एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन कमिंग इन द नेक्स्ट वन. सो व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन? So very frankly speaking, see, elements of design is nothing but anything that you see around you. चाहे वो ये नोटबुक हो, ये फोन हो, ये पेन हो, कुछ भी हो. फर्स्ट टाइम जब ये एग्जिस्टेंस में आया था तो किसी ने तो सोचा होगा ना कि ये ऐसा कुछ ला सकते हैं एंड इसको बना सकते हैं, इस तरीके का डिजाइन होगा. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इन अ प्रोग्रेस, इन अ मैटर ऑफ टाइम, ये फाइनल आउटपुट और ये फाइनल डिजाइन केम इनटू एग्जिस्टेंस. नाउ व्हेन these kind of things came into existence, लोगों ने सोचना स्टार्ट किया and people tried to categorize. So for example, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ and I am being categorized and some sort of like you know I will tell that first principles. तो ये जो principles और elements है ना, interrelated है. तो क्या वो principles हो सकते हैं on basis of which कि I am like you know being referred कि this is how a human looks. And
ऑन बेसिस ऑफ दो सेम प्रिंसिपल्स दूसरे और एक इंसान को भी डिपिक्ट किया जा सकता है. So now this is where came into existence this principles of design. So for example, I will just tell a few now. Example, symmetry. If I stand over here and there is an axis running through me, through the center of me, both the paths are kind of, you can tell, equal or the mirror images. So this is what symmetry is all about. पर जब हम डिजाइन में सिमेट्री की बात करते हैं, डेप्थ में डेफिनेटली जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए. जैसे प्रिंसिपल के लिए डेफिनेटली आई विल नीड अराउंड मैक्सिमम मिनिमम 2 to 3 क्लासेस. ओके, तो क्या है ना, I was talking about symmetry. So when we talk about symmetry in design, it is definitely like, you know, need not to be, it's always need not to be. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा के लिए everything have to be identical. Mirror image नहीं होना चाहिए. पर जो पिक्चर में जो कंपोजिशन आपको दिख रहा है, जो सेटिंग आपको दिख रहा है, in that particular set, in that particular composition which you see, either it should be equally balanced. So for example, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऐसे and you see this composition, this side is vacant. So this is an unsymmetric composition, or the principle of design used over here is like, you know, I must tell asymmetrical. Sorry, I told unsymmetrical, it's asymmetrical. Now अभी यहाँ मेरे साथ साथ कोई और faculty खड़े हैं, so that is when it becomes symmetrical, equal. Now if I place this blue color chair, I guess everyone can see over here this blue color chair. Okay, I will just put it a bit up. Okay, fine. And you see me over here on this side. Okay, in this okay, on this side itself. So this is an unsymmetrical composition. Now when will it be symmetry? Symmetry कैसे बन सकता है? So for example, मैं बस ये पेन से एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पर अगर मैं ये एक पेन रखता हूँ, okay, let it be like this. Okay, तो ये हो गया asymmetrical. Now अगर मैं यहाँ पे भी दूसरा एक रखता हूँ, though their colors are, I will just go down a bit, though their colors are different, might be they are not placed at the equal height, but as a whole in the composition they are depicting a sense of equality on both sides along this axis. अभी याद रखना है आपको कि एक्सिस हमेशा ऐसे ही रन नहीं करेगा, एक्सिस ऐसे भी हो सकता है, एक्सिस ऐसे भी हो सकता है. Okay, so we have radial symmetry, we have a lot of things to go into. The principles are those things which define any particular composition, जिसके थ्रू आप समझते हो कि इस composition में क्या-क्या चीजें यूज हुए हैं, and उसके like उन attributes के द्वारा आप उस composition को explain करते हो. Now ये जो attributes हमने यहाँ पे पाया है, these attributes, ये attributes तैयार कैसे होते हैं, right? तो अगर हम बोल रहे हैं symmetry, how you get symmetry? Because there is an axis running over here. तो elements में क्या है? We try to define those elements जिनके द्वारा we find the elements due to which we understand these principles. तो for example, अगर यहाँ पे ये lines नहीं होते, then you couldn't have defined कि ये चीज है क्या, right? So similarly, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो unit है जिसके basis पे we are defining and we are coming to the conclusion कि भाई इसमें ये वाला principle use हुआ है. तो वही जो units है, that is what is your elements of design. I wish everyone is getting it, like, you know, whatever we are discussing. Please let me know in the comment section. It's open to you all. Just do write down your comments कि आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत है, whatever it is. And definitely to share this video with all your friends. And as mentioned earlier, just write down your, like, you know, just go to the description box and download the app. It will help you a lot. I can see 3 people are watching it live right now. So do write your comments in the comment sections. I'm having my phone on this side to see whatever queries you have, you can write it down. Now we have, so elements or principles, so सबको समझ आ गया, elements of design and principles of design. Just write down a yes if you understood. I guess I can expect that much. इतना तो expect कर ही सकता हूँ. एक yes लिख दो अगर समझ में आया है, अगर नहीं समझ में आया है तो एक no लिख दो, whatever it is. Okay, fine. I will wait for your comments. In the meantime, दूसरे वाला topic जो है next वो discuss कर लेते हैं. That is what is your perspective. So what is perspective? We need to understand. So say perspective
अगर कोई और एक्सप्लेन कर रहा है शायद वो ऐसे एक्सप्लेन कर देगा. We have perspective. Perspective is from the point you understand an object or a composition. Now we have perspectives in general if I tell, but if I tell in depth, तो there are actually 5 different kinds of perspectives. लोग normally जो बोलते हैं उसमें ये include होता है 1 point, okay, then 2 point, then 3 point. बाकी ये वो लोग नॉर्मली जो जब कुछ भी बताते हैं तो ये 3 बता के छोड़ देते हैं, बट देयर आर एक्चुअली 2 मोर. वन इज द 4 पॉइंट and the other one is the 0 point or 0 point perspective. This is what these 5 are the different types. Now definitely 4 point और 0 point से कभी भी like कुछ भी एग्जाम हो जाए, निफ्ट हो जाए, नाटा हो जाए, like people never really ask any questions. तो 3 ही इंक्लूड करेंगे और 3 के बारे में ही मेनली डिस्कशन करेंगे. बट डेफिनेटली जब पर्सपेक्टिव्स के लिए चैप्टर ये कवर अप होगा यहाँ पे, तो आई विल डेफिनेटली टेल यू कि ये दोनों चीज है क्या. बिकॉज सी आई ऑलवेज बिलीव इन कि ऐसे रट के कोई फायदा नहीं है. तो समझ लो चीज है क्या, वेरी सिंपल है और आपको जानने का तो सबको पता है, राइट. सो आई विल जस्ट गिव यू आइडिया अबाउट कि 4 पॉइंट क्या है एंड 0 पॉइंट क्या है. नाउ व्हाट इज पर्सपेक्टिव. ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट कि हाउ यू विल अंडरस्टैंड एंड कि कौन से वाले पर्सपेक्टिव में है. और so see perspective, if I have to explain you in short perspective है क्या, so that is nothing but, for example, I am standing over here, okay, so how I see this board, this is my point of view and this is my perspective of seeing this particular scenario. तो हम लोग बोलते हैं अक्सर कि from your point of view you think that guy is correct, but from my point of view I feel he or she is correct, right? So that is what perspective is all about. From your point of view you think this is. Now I will give you a quick idea कि perspective है क्या. So see, from this point of view you see this pen, right? तो आपके लिए perspective क्या है? You see this pen like this. Now if I place this pen like this, okay, या फिर पेन को ऐसे ही रहने देते हैं, okay, let's keep this pen like this. Or let's keep this pen like this. Wait. Now what you see is a simple circle, right? अभी अगर मैं perspective को change करूं तो you see something else. अभी अगर मैं यहां से कुछ और दिख रहा है, पेन छोटा दिख रहा है, मैं perspective को थोड़ा और change करता हूं. So this is all about perspective कि as per as your situation or where you are situated, how you see this particular object. पर्सपेक्टिव यही तो है, लाइक इट्स एज सिंपल एज दैट. देयर इज नथिंग मच टू अंडरस्टैंड, ज्यादा कुछ है भी नहीं एंड इट्स वेरी सिंपल. ओके, नाउ क्विकली वी विल मूव ऑन टू, ओके, आई फील देयर इज अ इशू ड्यू टू दिस लाइट पार्ट. वेट, I guess each one of you can see it now clearly. Okay, fine. So now in general मैं 1 point का समझा देता हूँ कि कैसे originate होता है. So for example over here this is the point from which or in respect to which you are seeing the whole surrounding. So this is known as vanishing point. Okay. ये vanishing point हो गया, इसको हम बोलते हैं V1. This is for 1 point perspective. Now ये V1 एक लाइन के ऊपर सिचुएटेड है. दिस इज नोन एज द लाइन ऑफ होराइजन. ओके, एंड फ्रॉम दिस वेरी पर्टिकुलर पॉइंट, नाउ व्हाटएवर वी आर अंडरस्टैंडिंग और सीइंग इज इन रेस्पेक्ट विद दिस पॉइंट. तो इसका वेरी एक सिंपल सा एग्जांपल दो इसका. यू हैव सीन रेलवे ट्रैक्स, राइट? So they seem like that they are merging at one point, but in reality they are not. That is what is very simply like 1 point. तो अभी मैं अगर इसको ऐसे composition set करूं, this is a market area, you are moving with like through it. तो जो कुछ भी है will be in respect with the lines originating from this point. This is 1 point. अभी इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं how this 1 point thing is working out. Okay, I will just get something and फिर डिस्कस करते हैं.
Okay, I got here a box जिसके ऊपर काम चल रहा था regarding like you know जो the welcome kit for new students. This is just a simple one box which I have got. Now you see this box, okay? What do you see right now? What do you guys see? कौन सा वाला साइड बड़ा है and कौन सा वाला साइड छोटा है? Wait, I should fix this properly. So you see, this side seems to be larger, and ये दोनों ऐसे 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 जाते 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 at an infinite place they are merging. Am I right or wrong? I guess you all are getting that, right? So now this is what is all about one point perspective. वहां पे एक point है, and from that it's originating और ये वाला structure आपको मिल रहा है. ठीक है? अभी अगर हमें ये 2 point में समझना है तो ये हो गया, ये हो गया आपका 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव. हॉराइजन लाइन एक ही है बट दोनों पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है. तो दिस इज द होल लाइक स्ट्रक्चर एंड ये दोनों जा रहे हैं V1 V2. अभी 3 पॉइंट बाकी सब क्या है वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द एक्चुअल सेशन. जिस सेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे वहां पे समझेंगे. ठीक है, तो पर्सपेक्टिव समझ आ गया कि पर्सपेक्टिव के रिलेटेड क्या है, सो लाइक यू नो सिलेबस में एंड हाउ we are going to go about it. Now quickly let's go for conventional and unconventional uses. Okay, so this is in relation with how you use an object or what are the utilizations of a particular stuff that you are using. As simple as that. कुछ भी hard नहीं है. In depth definitely we will discuss once we are going into this topic or chapter. Next है poster design और stats. ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, तो इनके रिलेटेड थोड़ा समझना है कि कैसे एक पोस्टर को we slowly go start from and like you know ideation part then go into the actual design और कैसे कैसे ये सब होता है वो थोड़ा समझेंगे. कॉमिक स्ट्रिप तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा. पहले अगर कोई लाइक यू नो टेलीग्राफ के साथ साथ बच्चों के लिए वेडनेसडे को एक पेपर आता है, यू माइट हैव सीन फैंटम का आता था उसमें, या फिर आपने कुछ कॉमिक बुक परचेज किया है तो there will be this kind of boxes and एक के बाद एक सीन्स के ऊपर एक पिक्चर और उसके नीचे डायलॉग्स लिखेंगे. So this is all about comic strip. अभी अगर हमें प्रोडक्ट डिजाइन समझना है तो व्हाट इज प्रोडक्ट डिजाइन? तो ये तो भाई सिंपल सा चीज है. प्रोडक्ट डिजाइन है क्या? प्रोडक्ट डिजाइन कुछ भी नहीं है यार. जो अभी तक जो ये सारी चीजें ना इंटर रिलेटेड है एक से एक. तो जो भी ये डिजाइन थिंकिंग में बात कर रहे थे कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड ही बात कर रहे थे, ऐसे तो हवा में नहीं बात कर रहे थे. तो वही आइडिएशन स्लोली गोइंग इनटू द इनिशिएशन, देन डिस्कशन, टेकिंग इनटू द इनपुट्स and then final outcome of the product is known as the product design. कलरिंग का बात भी सही सेम वही है. फ्यूचरिस्टिक डिजाइन फिर से अभी ये सारे चीजें ना ये डिजाइन थिंकिंग प्रोडक्ट डिजाइन इनका ही नेक्स्ट स्टेप हो गया. तो कैसे एक डिजाइन को लाइक फ्यूचरिस्टिक किन चीजों को बोलेंगे, हाउ वी आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स फ्यूचरिस्टिक. ओके, I have got a query from Vidhi Singla. She is asking, sir please बताएं maths chapter wise weightage. Okay, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे विधि कि मैथ चैप्टर वाइज वेटेज कितने हैं. तो वो आ जाता है आपके गैप पार्ट में जहां पे इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और मैथ है. उसके बारे में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे. एंड आपके जो भी चैप्टर्स है इन जनरल उनके बारे में एक एक सेशंस आपको YouTube में भी अवेलेबल होंगे. अगर आपको लगता है कि आपको कोर्स की जरूरत है, ऐप डाउनलोड कीजिए और हम वहां पे ऑलवेज अवेलेबल है. अगर नहीं भी जरूरत है फिर भी डाउनलोड कीजिए. You will be always in touch via the chat section or communications will be much easier for your doubts or anything that you have over there. Okay, Vidhi, I hope you got an answer to your question. अगर आपको कुछ और दिक्कत है definitely comments में बताइएगा. Okay, let's move on. तो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन हो गया. अभी मैस्कॉट्स क्या है? मैस्कॉट्स अभी फीफा वर्ल्ड कप खत्म होके आ रहा है तो एंड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर चीज जो उसके लिए लाइक आइकन बन के रह जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे ब्रांड्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर होते हैं वैसे ही मैस्कॉट्स आर इमेजिन लाइक यू नो यू कैन टेल काइंड ऑफ एक इमेजिनेबल ब्रांड एम्बेसडर. ओके, इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है डिजाइन टीनेज चैनल पे, जाके चेक करो व्हाट इज मैस्कॉट्स एंड व्हाट ऑल डू यू नीड टू स्टडी फॉर दैट. ओके, now we will quickly move on to hoardings and banners. और चिंता मत करो, वीडियो अगर दिया भी हुआ है फिर भी I will be there to discuss regarding mascots again.
कमिंग टू होर्डिंग्स एंड बैनर, और हाँ यहाँ पे जो आपने टीवी देखा है, दिस इज काइंड ऑफ, दिस विल बी यूज्ड फॉर अ डिजिटल बोर्ड, तो ये भी चिंता मत करो कि सिर्फ इस बोर्ड में कैसे सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी, एंड दैट्स द होल पॉइंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है एंड पेरेंट्स दे आस्क फॉर सर ऑफलाइन कोचिंग और ऑफलाइन गाइडेंस। पहले तो लाइक इसको कोचिंग बोलना बंद करो। हाँ डेफिनेटली मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स दे डू द सेम थिंग, कोचिंग की तरह कंसीडर करते हैं। You consider it as a part of your exploration, then you can learn much more, believe me। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमें ट्रेन करके कुछ बना देंगे, तो वो तो भाई सर्कस के शेर को भी बनाया जाता है ना। चाबुक मार के यू कैन सी दैट दे आर ट्रेन, वेल ट्रेन्ड, बट उसको वेल ट्रेन्ड बोलते हैं ना, वेल नॉट वेल एजुकेटेड। ओके, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक चीज को समझो, उसके बारे में एक्सप्लोर करो, उसके बारे में जब एक्सप्लोर करोगे खुद के मन में डाउट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, पूछो, क्लियर करो, एंड इट्स अ ओपन फोरम डिस्कशन, एंड देन एट दैट पॉइंट यू हैव लर्न समथिंग, नॉट यू आर ट्रेन्ड फॉर समथिंग। एंड इसीलिए तो डिजाइन में आया है ना, वरना तो इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते थे और लाइक जस्ट लर्न समथिंग फॉर 4 साल, जिसके जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो उसके रिलेटेड उसमें कुछ नहीं है, अभी कॉलेज में जो सीख रहे हो उसके रिलेटेड इंटरव्यू में कुछ आता नहीं, और इंटरव्यू में जो पूछते हैं उसके रिलेटेड काम कुछ करना नहीं होता है भाई। 3 महीने का लाइक यू गेट अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग, एंड आफ्टर दैट यू आर वेल ट्रेन्ड टू डू अ जॉब फॉर दैट कंपनी। एनीवेज उन सब चीजों को साइड में रखते हैं, तो पिक्टोग्राम्स इज अगेन समथिंग रिलेटेड टू दिस, ये सारी चीजें काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड है। सीक्वेंशियल ड्राइंग इज एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप हाउ यू, सो इफ यू आर ड्राइंग अ फेस, पहले वी नीड टू फ्रेम कि फेस के हाउ द फोर पार्ट्स विल बी लोकेटेड, नाउ एट दिस प्लेस आईज, दिस प्लेस नोज, एंड देन we go into in-depth first the structural part, then in-depth detailing. So this is how sequentially how you draw step by step in very simple words. Okay, विधि, अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है तो प्लीज डेफिनेटली डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपका कुछ और डाउट है वो भी लिख दीजिए। वेरियस टेक्सचर्स एंड एक्सप्रेशंस। सो ये तो हो गया कि जैसे ये वाला जो दीवार आप देख रहे हो, दिस इज स्मूथ। नाउ द काइंड ऑफ टेक्सचर समझना है तो यहाँ पे क्विकली आई कैन शो यू गाइस। सो सी, दिस वॉल इज हैविंग अ डिफरेंट टेक्सचर, स्मूथ है, बट इफ आई गो इनटू एन मैग्नीफाइड व्यू उतना भी स्मूथ नहीं है, राइट। अगर हम ये बोर्ड देखेंगे तो दिस इज कंपैरेटिवली मच स्मूदर, ये वाला सरफेस देखेंगे तो दिस इज हैविंग अ डिफरेंट टेक्सचर, माय हैंड इज हैविंग अ डिफरेंट टेक्सचर। तो हर एक सरफेस का अपना अपना टेक्सचर होता है, दिस इज ऑल अबाउट टेक्सचर। ओके, अभी सिर्फ इतने में ही खत्म नहीं हो जाएगा, ये इन डेप्थ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग। ओके, सो डोंट वरी, slowly and gradually we will go into each of these things and we will discuss कि है क्या 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 चीजें समझना है and all. Okay, now we have something known as metamorphosis. So ये भी थोड़ा समझने वाला चीज है, and in depth डिजाइन को समझना, in depth डिजाइन के अंदर जाना, इसके रिलेटेड भी है। And then we have logo design, ये तो very simple है, आपने डिजाइन टीनेज का लोगो देखा ही है, तो it involved a few steps and a few procedures before we went into that actual logo। कुछ चीजें हमने सोचा है कि ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नाम के लिए तो सोचना पड़ा ही था, फिर when the team was involved and I was there, so we were having some concepts कि इसको कैसे इंक्लूड करना है। हमने एक्चुअली 3-4 लोगो पहले बनाया था उससे, और उनसे इंस्पिरेशन लेके कि ओके नहीं इसको ये पसंद आ रहा है तो उसको वो नहीं, इसको हमें लग रहा है कि नहीं वी कैन गेट इट दिस अ बिट मॉडिफाइड, एंड फाइनली व्हाट वी केम टू इज दैट पर्टिकुलर लोगो। हमारा पर्पस क्या है, टू सर्व एजुकेशन। तो डिजाइन टीनेज अगर ये आज एक क्लोथिंग ब्रांड होता तो डेफिनेटली लोगों के लिए जो इम्पैक्ट आता वो थोड़ा शायद बहुत कुछ अलग आ जाता। तो यही सारी चीजें हैं, एंड दैट इज हाउ वी डू इट। नाउ कमिंग बैक टू ये सारी चीजें फिर से कुछ ना कुछ इंटर रिलेटेड है। व्हाट इज ह्यूमन एनाटॉमी? तो अभी ये जो सीक्वेंशियल ड्राइंग है ना, ह्यूमन एनाटॉमी में थोड़ा बहुत ये सीक्वेंशियल ड्राइंग फॉलो करेंगे जब हम ह्यूमन एनाटॉमी समझेंगे, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल ट्राई टू गो इन डेप्थ। सो हाउ यू आर फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर, अगर ह्यूमन एनाटॉमी के रिलेटेड भी एक स्केच का हाउ यू शुड स्केच एंड ऑल, उसके रिलेटेड मैंने एक डाल के रखा है, हमने एक डाल के रखा है इन डिजाइन टीनेज चैनल, you can go and check it out how step by step we are going. So for a view male, what should be the ratio of this legs and body का कितना रहेगा, ये सारी चीजें slowly and gradually we go into it. Now similarly अगर मैं बात करूं कि how you draw,
So for example, if a figure is going to, so first we will just make, okay, this is the portion for the hand. Now we will have, okay, body के लिए इतना part आ गया, okay. Now we have the legs here. Now slowly and gradually we are going and moving into, this is the hand part. So this, like, you know, ये chest वाला region है. This is the portion for the stomach. This is the portion for the knee. Okay. This is the portion for the leg. अभी leg में toe कैसे रहेगा, ये पैर कैसे रहेगा. So this is all about slowly and sequentially how we go into that. And human anatomy mainly वही describe करता है कि how and all you need to understand the human figure, a human posture, and slowly go into that and understand. अभी ये तो in depth एक human figure हो गया, पर in human anatomy you definitely have human anatomy of face. एक face को अगर बनाना है, किसी का portrait बनाना है, तो how you need to understand those things. Now moving into still life drawing, as simple as that, बहुत ही simple है ये. So like you know, these things are again kind of interrelated. So composition और rendering है दूसरा वाला चीज. So see, if I draw make a still life, definitely उसमें मुझे composition और render कैसे करना है वो समझना है. What is composition? तो अगर मैं यहाँ पे एक flower vase बना रहा हूँ, okay, तो इसके पीछे वाला बैकग्राउंड तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ. इसके नीचे भी कुछ सरफेस होना चाहिए जहाँ पे ये फ्लावर बस है. तो I might draw a curtain like this. इसके नीचे एक टेबल बना दिया. This is all what it describes a composition. ना अगर मुझे यहाँ पे जाके इसको डिपिक्ट करना है तो सिर्फ मैं लाइन ड्राइंग तो नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए रेंडरिंग भी करना पड़ेगा. तो these things are again kind of interrelated. और अगर मैं लास्ट में कैरेक्टर डेवलपमेंट में जाऊँ तो कैरेक्टर डेवलपमेंट इज नथिंग बट मैस्कॉट. सुना था ना, तो मैस्कॉट का जो फिगर आता है वो इमेजिनेशन, लाइक इमेजिन पीपल उसे इमेजिन करते हैं, दे काइंड ऑफ ट्राई टू डिपिक्ट इट. कैरेक्टर डेवलपमेंट इज समथिंग लाइक दैट, काइंड ऑफ अ कार्टून कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कैरेक्टर्स डेवलप करना. This is all what you have in the chat section of NIFT. कुछ भी डाउट्स है तो चैट सेक्शन ओपन है, पूछो, फ्रीली कॉल करो, नंबर दिया हुआ है. You can let us know in WhatsApp chat and don't forget to download the Design Teenage app. मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ऐसे ही प्रिपरेशन चलता रहेगा. इन डेप्थ आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल्स, जो कुछ भी जरूरत पड़ेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस. ये ऑलवेज है, लाइक यू नो, भले ही ट्रेनिंग डेफिनेटली जरूरत नहीं है, पर जब आप कुछ चीज को समझोगे और दोबारा उसे करोगे, तो फॉर एग्जांपल आपने समझ लिया कि गाड़ी कैसे चलाना है, अभी डेफिनेटली वो ट्रेनिंग ही है. बट व्हेन यू ड्राइव अ कार रेगुलरली, आप सुबह ऑफिस जाते हो, आते हो, या फिर रेगुलरली आप ड्राइव करते हो, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका तजुर्बा बढ़ता है, एंड फाइनली व्हाट यू गेट इज यू आर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन ड्राइविंग, एंड यू नो कि क्या क्या चीजें हो सकते हैं. वो आपको कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई ट्रेन करके बता नहीं सकता है. दिस इज व्हाट इज नोन एज प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करो एंड वी विल मेक श्योर वी इम्प्रूव. सारे जो चैप्टर्स डिस्कस किए हैं, कुछ ना कुछ शॉर्ट लाइक इन जनरल वीडियोस हर एक के लिए आएंगे. दिस इज अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम द इंस्टीट्यूट टू ईच वन ऑफ द डिजाइन एस्पिरेंट्स, निफ्ट एस्पिरेंट्स studying in India, outside India, and इसके अलावा इन डेप्थ इन सारे टॉपिक्स के डिस्कशन जो कुछ भी बताया क्रैश कोर्स में, till college admission guidance will be provided. For that, course is available in the store section of Design Teenage app. Just check it out. Okay, अभी चलते हैं भाई गैट सेक्शन में. विधि का क्वेश्चन था मैथ में क्या क्या है, वो तो इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, बट इन जनरल अभी समझेंगे कि हम लोगों को करना क्या है गैट में, और गैट है क्या, लाइक व्हाट आर द थिंग्स इंक्लूडेड. ओके, so I think I should get a proper duster. Actually, I'm rubbing with a cloth now, but I will get it by today itself because इसमें थोड़ा सा बहुत गंदा हो रहा है. I feel कुछ डाउट है, कुछ like you know any questions that you guys are having, just ask it down, ask about it in the comment section. And don't feel any hesitation, just feel like you know you already know me, so ऐसा मत सोचो कि आप मुझे पहचानते नहीं हो, क्या पूछे कैसे पूछे, nothing like that. आप जो प्रिपरेशन के थ्रू जा रहे हो, मैं भी एक टाइम में इस प्रिपरेशन के थ्रू गया हूँ, and that's why I am able to explain you, and I thought कि this is what I should be, और मुझे जिसमें like you know कुछ मिलता है, I chose it as my career, and thought that इसके साथ proceed करते हैं. Some of you, if you have seen me on my own channel, like Design Teenage, my channel which I used to run, or still I am running, you can tell.
on my own name, Shashwat Mondal. So वहाँ पे I used to guide students related to NATA architecture for the past 2 years. पढ़ाया है बहुत सारे को, and finally we decided that we should go into this. Okay. Sir, will you be adding detailed videos for these topics on YouTube? अभी विधि, I will tell you very frankly, in short, in detail वैसे अगर मैं डिस्कस करने जाऊँ हर एक टॉपिक के लिए टाइम लगेगा डेफिनेटली. नाउ देखो, अगर मैं क्रैश कोर्स वी हैव इट राइट, वी हैव फैकल्टीज वर्किंग ऑन पेपर्स. मैं बहुत फ्रैंकली आप लोगों से डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, तो इट्स लाइक आई कैन नॉट इंक्लूड एवरीथिंग ओवर हियर राइट. इन जनरल अभी जो समझा है आपको डेफिनेटली शायद समझ में आ गया है कि कैट में क्या क्या है. अभी इन टॉपिक्स का इन जनरल ओवरव्यू, क्या क्या चीजें पढ़ना है एंड हाउ यू शुड गो, ये टॉपिक है क्या, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस जरूर होंगी. बट जो टेस्ट लिए जाएंगे, जो स्टडी मटेरियल्स आपको अवेलेबल होंगे, जो लेक्चर्स लाइव क्लासेस में जो फेस टू फेस इंटरेक्शंस होते हैं, कमिंग टू द पार्ट, अगर आपका कुछ डाउट है तो जो डाउट सेशंस होंगे, कमिंग टू द फैक्ट, एक टॉपिक के लिए जो हम 2 से 3 दिन का टाइम यूज करेंगे एंड आपको अच्छे से समझाएंगे लाइक कि इसमें है क्या. एंड जब डाउट्स लेते हैं ना तो थोड़ा टाइम और एक्स्ट्रा भी जाता है. तो ये सारी चीजें जो होंगे, ये तो लाइक वी हैव लॉन्च्ड अ क्रैश कोर्स. तो ये जो हम क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए प्रोवाइड करेंगे, अगर सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं है और अगर मैं हर एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करने के जाऊँ, पहले तो टाइम कंस्ट्रेंट है ही है, और उन बच्चों के लिए भी डेफिनेटली एक इनजस्टिस है कि दे हैव एनरोल्ड फॉर अ क्रैश कोर्स, व्हाटएवर इज द अमाउंट, वो 1000 हो 2000 हो, बट they are coming for that. So उनको भी like it should be equal for everyone. But अगर कोई बच्चा है, if someone is there who are willing to learn from YouTube, you are very open to see these things. आपको in general सारे topics यहाँ पे cover up करवाए जाएंगे and we will try to get like give our best in every aspect that we can. But हाँ, जो कोर्स में आपको मिलेगा डेफिनेटली कंपैरेटिवली यहाँ पे लाइक देयर विल बी सम डिफरेंस. आप जब डिस्कस करते हो फेस टू फेस इन यू अंडरस्टैंड समथिंग, इट इज कंपैरेटिवली बेटर. वो चीज तो है ही, वरना तो सब यूट्यूब से पढ़ लेते राइट. आपको भी लाइक व्हेन यू आर आल्सो लुकिंग फॉर समथिंग, यू आर लुकिंग फॉर ओके व्हाट कोर्स इज अवेलेबल एंड हाउ आई कैन गेट इन टच विद समवन एंड प्रिपेयर माय बेस्ट फॉर दैट राइट. सो दैट इज हाउ द चेंज इज. एंड आई होप फीस जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. एंड जब ये फीस लाइक हम लोग दूसरे इंस्टीट्यूट्स की तरह 15 दिन 30 दिन ऐसे नहीं होता है. व्हेन वी डेवलप अ रिलेशन, ये हमारा फर्ज बनता है कि वी गाइड यू टिल द एंड ऑफ योर कॉलेज एडमिशन. और अगले 4 सालों में भी अगर आप कभी कॉल करोगे कि सर मुझे ये डाउट आ रहा है, तो डेफिनेटली आई कैन नॉट टेल दैट ओके फीस भरो फिर डाउट क्लियर करना, ऐसे नहीं होता है. सो रादर देन कीपिंग इट लाइक दैट, जितना कम फीस में हम मैनेज कर सकते हैं, we are trying to do that and a proper guidance till college admission. जो भी doubts है, जो भी clarifications है, जो भी sessions जरूरत है, till with counseling and everything we will guide you till college admission. यही सब चीजें हैं. अभी आगे आप सोच लो, आपको देखना है कि what is best for you definitely, and we will give our best, that I can promise you. Now अभी discussion बहुत ज्यादा हो गया, तो चलते हैं गैप में और डिस्कस करते हैं कि गैप में है क्या. Okay, so we have here gap. So gap में क्या है? 4 पार्ट्स हैं, simply speaking. English, we have reasoning, we have GK, and we have maths. अभी पढ़ना क्या है? I will not fabricate anything कि ओके आप आओ कोर्स ज्वाइन करो बहुत कुछ पढ़ाएंगे, लाइक ये this is very wrong and people are doing this. That's the whole problem and that's the whole point. Okay, they are fabricating things. अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, बेसिक चीजें बहुत समझना बहुत जरूरत है. बेसिक ग्रामर, बेसिक लिटरेचर, बेसिक कंपोजिशन, तो ये सारे जो चीजें हैं ना, आप ऑलरेडी 12th में हो, आपने इसमें से हर एक चीज ऑलमोस्ट कवर अप करके रखा है. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर, इनसे चीजों को लाके पहले आपको एक एक्सप्लेनेशन देना है एंड देन स्लोली गोइंग इनटू अ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. PPP, that's all it should be the mantra for this. Coming to reasoning, practice तो जरूरत है ही, but along with that क्या-क्या टाइप्स के हो सकते हैं? It can be blood relation, it can be under visualization of a 3G object. तो ये सारे जो टाइप्स हो गए, understanding the theory of these types and then again formula of PPP.
अगर मैं जीके की बात करूं, अपडेटेड रहना है, जीके के रिलेटेड क्या आएगा, इसको लेकर हर साल किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हो, 2 इंस्टीट्यूट्स में मैंने बच्चों को देखा एनरोल्ड होते हुए, आफ्टर दैट स्टिल दे सर्च फॉर लाइक थिंग्स ऑन यूट्यूब, ढूंढते रहते हैं ऑनलाइन कि जीके में क्या आने वाला है। जरूरत नहीं है 2 इंस्टीट्यूट्स में, अगर आप फुल्ली, आपके अंदर डेडिकेशन है, पैशन है, यू कैन डू इट, you can do it, and at the end of the day self study is mandatory, self study mandatory है। तो जीके में things related to this upcoming things right now, जो कुछ भी हो रहा है सराउंडिंग में, एंड क्योंकि ये एक फैशन इंडस्ट्री में आप जाने वाले हो, तो थोड़ा बहुत डे टू डे थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन द फैशन इंडस्ट्री। अभी इसके रिलेटेड सेम चीज हो गया, पीपीपी फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एंड ईई दैट इज एक्सप्लोर एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर। तो यहाँ पे इन दोनों के लिए हो रहा है पी पी एंड पी, और इसको लिए हम करेंगे पीपीपी एंड ईईई। सो ईई मतलब एक्सप्लोर एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर, एंड विद दैट यू नीड टू डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ऑफ दोस थिंग्स। एंड मैथ्स के लिए अगर मैं सिंपली बताऊं, बहुत बेसिक सा मैथ्स आता है, 9th 10th और 11th के कुछ बेसिक्स, तो ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आप समझते हो, अगर आप लॉजिकली चीजों को सॉल्व करना जानते हो, इजी हो जाएगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है। अभी यही सब है, इसीलिए मैंने बताया था कैट विल नॉट टेक मच टाइम। कैट इज व्हाट जिसमें बहुत सा कंपैरेटिवली सिलेबस ज्यादा है। तो नाउ these are in general or in basic, these are the things which like are going to be there in your NIFT 2023 entrance exam, या फिर आने वाले टाइम में भी अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है, तो these are the things that are going to be there for the NIFT entrance examination. Okay, now what's next, बताया है, हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो विल बी देयर, एंड मेक श्योर आप जाके डाउनलोड कर लो, और उसके बाद आई एम देयर, द होल टीम इज देयर टू गाइड यू ऑल, एंड दिस विल बी अ काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, and this will be a kind of a relation, a bond with you and Design Teenage. That's all we have to say for today. Thanks a lot. This is Shashwat Mandal over here signing out, and hope to see you all in the upcoming videos coming soon. Stay tuned and see you over here in Design Teenage. Any guidance, any help you need, anything, just feel free to ask. Feel free to write us in the email that we have, the contact number that we have. We have all the social media handles available in the description box, and also you can make sure you download the app and write us down in the comment section for an easy connectivity, and we will try our best to help you out and bring a change to this new age career options in India, and not making it a coaching but making it a place of learning and understanding, innovation, creativity, जहाँ पे आप लोग explore करोगे, ना ही train होगे। That's all for today. Thanks a lot. See you all in the upcoming video. Bye.